People think a lot about like कि मैं कोई सोशली बहुत ही कुछ क्रांतिकारी फिल्में बनाता हूँ, ऐसा कुछ करता नहीं हूँ. क्या नहीं करते? आरक्षण आपने बनाया, उसके बाद अगर आप क्रांतिकारी नहीं तो फिर क्या है? नहीं, मैं कहानियाँ कहता हूँ. अच्छा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल द स्टोरीज विच आर ऑल एग्जिस्टिंग और विच डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जनता के ओपिनियन से काम थोड़ी आता है और जाता है. करण जौहर काम देना बंद कर देगा, आदित्य चोपड़ा काम देना बंद कर देगा, राजकुमार हिरानी काम देना बंद कर देगा, या मैं काम देना बंद कर दूंगा. और जनता भी कितने लोग हैं, 5% लोग हैं जो ट्रोलिंग करते रहते हैं और जो सोशल मीडिया पे रहते हैं. उसकी क्या फिक्र करते हो यार? स्मिता, मैं स्थायी विपक्ष का व्यक्ति हूँ. कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस की सरकार भी मुझे पसंद नहीं करती थी. जब मैंने राजनीति बनाई तो स्पेशल कांग्रेस के लोग आए थे, वो संसद सर्टिफिकेट के बोर्ड की व्यूइंग में फ्लाई करके आए थे और नहीं दिया मुझे सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको लगा कि सोनिया गांधी का जो है वो कैरेक्टर है कतरीना का. स्मिता, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ. आप पार्टी बदलते हो, नेता कहते हैं दल बदलू है. जनता तो दिन में 4 पार्टियां बदलती है. आज सबको सब कुछ फ्री चाहिए, बिजली होनी भी चाहिए, पैसे देंगे नहीं. देन यू एज अ पॉलिटिशियन यू स्टार्ट फीडिंग टू दिस आइडिया. तो कर्नाटक में 5 वादे कर देते हो, राजस्थान में 7 वादे करते हो, और दिल्ली में तो वादों की झड़ी लगी हुई है. You do believe in democracy. There is nothing better than democracy. I have tried to study and examine, but you know, the form of democracy can be changed. It's not necessary that there should be a parliament of the winners as well only. Well, losers also have to have a voice. जब क्रिमिनल जेल से निकलता है उसको माला पहनाते हो तुम लोग, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हम क्राइम रोक लेंगे. बहुत गया गुजरा है बंगाल, बट बंगाल भी काफी प्रोग्रेस कर चुका है बिहार के मुकाबले. बिहार में हुआ ही नहीं. अगली फिल्म जो मैं बनाऊंगा, जिसकी टाइटल मैं आपके जरिए बता देता हूँ दुनिया को, उसकी टाइटल है जनादेश. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. This edition is being filmed in the city of Mumbai. My guest today is a man who's a filmmaker who's made films on issues which confront many of us, of social struggles, of class and caste conflicts. His films show power politics, corruption and resistance movements. Prakash Jha has worked with some of the most renowned actors who respect him because he has done work that transcends genres. A man of few words, you will not see Prakash Jha making bombastic claims about his films or the numerous awards he has won. He's won many awards, as I said, but some of the national film awards that he's won: Best Feature Film for Damul, Best Dialogue for Apaharan in 2006, Best Screenplay for Apaharan, the Filmfare Critics Award for Best Film, Damul. He also got the National Film Award for Best Film on Social Issues for Gangajal, the National Film Award for Best Costume Design for Raajneeti. The National Film Award for Best Non-Feature Film was Sonal Faces After the Storm. The IFA Award for Best Dialogue, Apaharan. Filmfare Award for Best Documentary, Faces After the Storm. National Film Award for Best Arts Culture Film, Kudiyattam. National Film Award for Best Industrial Film, Looking Back. Thank you so much for coming to our studio, Mr. Jha, or should I call you Prakash Ji, which I really don't know how to address you. So, you just feel comfortable. You can call me Prakash. There is absolutely no problem. दोनों के एक ही नाम है. मैं भी आपको प्रकाश ही बोलूँगा. That will sound like my basketball coach calling me, on the ground. But yeah, I will. Please call me Smita, and I will call you by the first name. And I apologize to all viewers and listeners who think I'm taking undue advantage of your niceness by calling you by first name, because I really admire your body of work so much. I've interviewed you before, and even then it was like a fangirl moment, because it's phenomenal, the kind of work that you do. It's so raw. I'm sure you've heard that before. It's nothing new that I'm telling you. But the array of your star cast and how you're able to bring out the best in every actor, even though they are this ensemble and there are so many actors, and everybody seems to be giving it their 100% and more, and feel valued in that film, even though there are so many characters.
So, but I would like to know today more about your journey. What is it about that मिट्टी of Champaran कि उस भूमि से, उस ज़मीन से इतने क्रिएटिव लोग आते हैं, चाहे आप हों, चाहे मनोज बाजपेयी जी हों. What is it about Champaran? Tell me. It's a very fertile land. And politically very literally as well, because active. you see, हमारे चंपारण की ज़मीन को भाट की ज़मीन कहते हैं. मतलब हर अनाज उगता है वहाँ, गन्ने से लेके, धान से लेके, गेहूं से लेके, हर चीज़ उगता है. और we have a tremendous kind of water retention and water table in Champaran. But that apart, I think... but उसमें metaphor भी आ गया ना? All kinds of things, yes. I think it's probably also a coincidence. Manoj Bajpayee is not, his village is not too far from mine. We didn't know each other. I mean, I was only here. We met in Mumbai. Achha. Pankaj Tripathi also is from Gopalganj. Gopalganj, yes. And there were others, our predecessors who were from Bihar. कौन है और? बिहार से तो of course, but from Champaran? चंपारण से, West Champaran ना हुआ? हाँ, वेस्ट चंपारण से, not that I remember. No, हाँ. And historically also, for our young listeners and viewers who are in the 17 to 30 age bracket who don't read much about Indian history, Champaran has a significant role to play in Indian history. Indigo plantations, जी. the land was good for indigo plantations, and the Britishers set up lot of kothis, and they used to control and they used to force the farmers to plant indigo, against which there was a lot of resentment, and Mahatma Gandhi Yes. traveled all the way to Champaran, and he protested, defied, he was imprisoned, and it all happened in Motihari court. Motihari used to be part of Correct. Champaran at that point of time. Now, of course, it is East Champaran. So that is how Champaran has, and it was probably the first major protest by Mahatma ji. तो जब आप छोटे थे तो आपके दादा या नाना ने कहानियाँ सुनाई होंगी इस बारे में about you are born and living in an area which has historical significance. Were those conversations part of your childhood? ये बातें होती थी? वो कहते हैं ना कि आप मंदिर के पास रहो तो मंदिर कम जाना होता है. तो वहाँ तो ये चीज़ें आम थी. तो हम वो सारे स्तंभ थे जहाँ पर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, वो कोर्ट रूम भी था. इनफैक्ट हमने जब दामुल शूट किया था तो उसी कोर्ट में शूट किया था जहाँ उनकी सुनवाई हुई थी. जो संजीवना का सीन है वो वहीं हुआ था दामुल का. तो दैट वाज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी डिडंट हैव टू हियर दोज स्टोरीज, बट इनफैक्ट मेरे गांव से बहुत नज़दीकी है एक जो गांधी जी ने जो आश्रम सेट किया था भिथा, तो वहाँ भी हम जाते थे. वो तो बगल में ही है वहाँ. How do you pronounce? I thought it's बेतिया. बेतिया तो जगह का नाम है. जगह, हाँ. ये को है? भिथा करके है. भिथा, अच्छा. तो this is all kind of I mean, we never really particularly. But somewhere in the recesses of your mind, those things are there, right? About it, because most of your films are based in that milieu, है ना? उस जगह से. No, that is because I am very curious about whatever is happening, to understand why it is happening, and once the equations become slightly clearer, then the stories begin to form, and when there are things that I would like to speak about, I mean, each film represents certain social
kind of society is my Yes. is my character, Yeah. always. And the conflicts which happen. And yes, everything, every rule, law, social change, progress, development, everything brings about some change at the But basic see, level. What makes me curious is that it's a small town. You're living in a small town. How come, whether it is you, whether it is Mr. Vajpayee, whether Pankaj ji, all of you would have not experienced conflict in your early years, है ना? I mean, all three of you are upper caste people, so you didn't face that. But for all three of you, conflict is something which you portray so beautifully, whether in your acting or in the making of the films. But that is drama. The crisis and conflict is what drama is all about. And when we are telling stories, stories are, about the crisis, about the conflict, about the struggle, about, all the hindrances that we face in our lives. We have seen everything. I remember right since childhood, although I must admit that most of my childhood was spent in Sainik school. So I didn't go to school in Champaran. Achha. But, we are still farmers. Even today, my younger brother who looks after the farms, so I'm connected to the village almost on a daily basis. So I would know what exactly is happening out there. And I think Biharis have a very special aptitude for, whatever is happening in society. We like to know, and we are zameen se jude hue. very interested in Yes. politics. Yeah, it's in your khoon, no? It's genetically we are, we are aware. Like, even in a village, they will talk to you, they will tell you what the BBC Correct. said, what's happening in Saudi Arabia, or what's happening in Sweden, or what's happening in America or South America. They are aware about everything that's happening. And it's historically been, right? Patliputra se ke time se ya usse pehle se bhi agar hum dekhe, that it's a I don't know whether to use the term volatile, but Jagruk, I would say, about everybody out there is aware. Awareness, yes. And if you see, most of the social movements, Yeah, originally. whether it is student, whether it is labor, whether it is the leftist movements, whether it is Naxalbari, they all began in that area. And one of the most important movements led by Prakash Narayan, Who's there? which changed the history of this country, began there. You did that film also on... Yes, I made a film on him. Yeah. It's a bio on Prakash Ji. One of the earliest documentaries made by ANI was on the JP movement. And it won awards and things like that. But वो ज़माना भी था documentary filmmaking का. आपने भी इतने सारे बनाए हैं. जी. So anyway, let's rewind again. Why did you decide to join films? There's, you are in Sainik school, you're from Bihar, where one would think from a farmer family, but agriculture was not your scene. UPSC nahi lena tha. How come films? It is so strange because when I was informed that you would interview me here, everything began here in this place. Sun and Sand. Okay. The backstory is that I lost interest in pursuing academics which would lead me to UPSC. I was selected for the National Defence Academy. I got through. क्योंकि सैनिक स्कूल से सैनिक स्कूल में पढ़े थे. मेरे बैचमेट्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल होकर के रिटायर हो चुके हैं. Okay. और मैंने
आर्मी नहीं ज्वाइन किया और आई डिड माई 12th CBSE and then I went to Delhi University and I was good in maths and physics. Which college were you in? I was in Ramjas. Ramjas, okay. But by the time that I sort of like began my college, I kind of like, I had lost interest and I wanted to do something different because, everybody was talking about कि graduation हो जाएगा तो UPSC करेगा, IAS तो बन ही गया, because, I was good at studies and from a Brahmin family, farmer's family, capable family, and I was, वो चार्ट आउट पाथ का हो ही जाता है ना, और वहाँ हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ना बिहार में, हम लोग यूपीएससी सर्विसेज को मतलब IAS IPS यही करते हैं वहाँ, और तो कुछ होता नहीं है. सो आई थॉट दैट लेट मी do something else, and it was a big shock to my father and my mother when I went and told them that I was not going to do my graduation. I was going to go and join JJ School of Arts. बवाल मच गया होगा घर में. हाँ, मतलब it was a big thing, in the whole, I mean, I was outcast from the whole society. My father was very ashamed of me. Really? And obviously, I'm क्या paint करोगे तुम, signboard paint करोगे, and because I had just been gotten introduced to kind of like, the various art forms that I could follow or I could pursue or I could make my life out of that. Anyway, so the struggle went on for about a year. And so you did scholarship से पढ़े, आप क्या किया? Did he give you money for? He wanted to. When I was leaving home, finally, sort of, so I didn't take any money from him. I had some 300 rupees when I left home. Goodness. And और वो भी इस शहर में. और उसमें से 127 रुपए का टिकट लग गया पटना से मुंबई तक का. मुंबई क्यों आया मैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बट मैं मुंबई ही आया क्योंकि आई could have gone to Delhi to join the School of Art, but JJ School कैसे भी दिमाग में था और मैं यहाँ चला आया. And so while I was kind of preparing to join the school because semester had begun, I had no place to live, I had no money, so I was to do odd jobs and all kinds of things I did. I used to tutor English to Gujarati businessmen in Kalbadevi. There used to be for them to converse with the foreigners. There was a small institute which used to and do odd jobs on Juhu Beach or wherever. And I made friends with someone who was from Jaunpur when in the train itself. So I used to meet him sometimes, and in his building used to live an art director, Agajani, and he and I became friends. Just like that, because talking about photography, talking about something. So one day he was kind of like, I think it was Sunday when he was just leaving home, and I asked him, कहाँ जा रहे हो? So he said, वो मेरे डायरेक्टर हैं चांद साहब, उनको मिलने जा रहा हूँ. तो पहली बार ज़िंदगी में मैंने कहा आ जाता हूँ साथ में आपके घूमते. We took a train we used to live in Dahisar, came to Santa Cruz. Sun and Sand में धर्मा फिल्म की शूटिंग हो रही थी. नवीन निश्चल, रेखा जी, प्राण साहब, ये लोग थे फिल्म में, और एक गाने की पिक्चराइजेशन चल रही थी यहीं इसी होटल में. उस जमाने में यहाँ पे सिर्फ एक यही होटल होता था. ये सब नोवोटेल और बाकी मेरिट वगैरह या होराइजन बन रहा था उस वक्त. तो वो this is 1972. Goodness. Okay. Yes. And I stood in a corner and I watched, and then I saw the trolleys being laid, the lights being set up, the glasses being because there was a
action scene where Naveen Nishal had to jump through the glass and the duplicate dead, and there was a song going on, and there was the dresses going around, and there were the actors and the music and everything, and I said, my God, this is it. This is what I would like to do. Director बनना है मुझे. It's literally true ना कि वो glitz and glamour is what first attracts. Absolutely, absolutely. The whole ambience was like, I stood there for 12 hours. डर के मारे कोने से हिला नहीं कि कोई मुझे हटा ना दे यहाँ से. And I went back to the Hisar. और रात को आगा जानी साहब जो थे ना, वो बहुत बड़े कारीगर थे. मुगले आजम में जो शीशे का काम था, जो प्यार किया तो डरना क्या, वो जो गाना, वो पूरा सेट उनका लगाया हुआ था. ओके. तो आई मेट हिम इन द नाइट एंड आई सेड, आपको कल फिर चलना पड़ेगा. चांद साहब से मुलाकात कराई, मैं उनका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ. एंड ही वॉज वेरी काइंड एंड ही brought me the next day and introduced me to Chand Saab, and I was the 13th assistant. 12 पहले से थे. But you needed a foothold. I just needed to be around shooting, so I mean, but in 4 days. जे छूट गया उस दिन. हाँ, अब उसके बाद जे छूट गया. फिर 4 दिन उनका असिस्टेंट रहा मैं. And I realized that because I just wanted to become a filmmaker. I realized that ये तो बहुत मुश्किल है. मतलब इनके असिस्टेंट्स 10-10, 12-12 साल से अभी तक असिस्टेंट ही हैं. So at the end of the schedule, 4-day schedules, they finished the song, and I took a train. I went to Pune because I was aware about the FTII. And since I had not graduated, I was qualified only for one course, which was film editing. हाँ, yeah, obviously technical, हाँ. Technical. उस वक्त वो इंटरमीडिएट 12+1 अच्छा, वो एडमिट करते थे. तो मैं 12th था, 1+1 की मेरे पास डिग्री नहीं थी. सो आई केम बैक, आई टुक ए जॉब इन ए रेस्टोरेंट एंड टुक एडमिशन इन केसी कॉलेज. सो वो एडिटिंग का कोर्स किया आपने? नहीं किया? उसके बाद किया ना. उसके बाद तो सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो अगले साल फिर मैं अपीयर हुआ, कंपटीशन में compete किया. Who were the people there at that time? My classmate and batchmate was David Dhawan. Oh, okay. We went in 2 different ways, but we were together in the class. एक उनकी फिल्में देखी और आपकी फिल्में, like completely different genres, But there were lots of people, like Nasir was with us. Om Puri was with us. Vinod Chopra was at the same time. क्या बैच था? Vinod Chopra. Kundan Shah was with us. Okay. Ravi Ojha, who became a very important kind of like, a TV director. He was with us. Several very good technicians, like Vinod Pradhan was with us. Rajan Kothari was with us. So this is a very illustrious batch. But did you meet each other? क्योंकि अलग-अलग कोर्स कर रहे थे आप ना? हाँ, तो इंस्टीट्यूट में तो मिलते ही थे ना, हम साथ ही थे. बहुत छोटा सा बैच होता था. 40-50 लोगों का बैच होता था. ओके. तो वो हम इंस्टीट्यूट में तो मिलते, एक दूसरे के लिए काम भी करते थे, बिकॉज हम किसी के लिए कैमरे का काम कर रहे हैं, किसी के लिए एडिटिंग का काम कर रहे हैं, किसी के लिए. That time it wouldn't have ever occurred to probably Nasiruddin Shah कि एक दिन ये मेरे डायरेक्टर बनेंगे, या for you to think. नहीं, but that's what we expected कि मतलब ये बनाएगा फिल्म तो मुझे लेगा. और किया आपने सब. किया. All of you worked. I mean, Kundan Shah also you know had Nasiruddin Shah working for him, and Nasir worked with in only one film with me in Raajneeti. But several others have worked. Tom Alter was there with us, Okay. And he also did some small part in one of the. He was instructor या he was learning something. Learning, he was student. 72 की बात कर रहे हैं आप तो. हाँ. Girish Karnad used to be our director. Strike नहीं हुआ था उस वक्त. उसी वक्त. हाँ. साल भर के ही पैसे मेरे पास थे. हाँ. और साल भर के बाद स्ट्राइक हो गया. So after a year of training, with 73 end के तक तो उस वक्त आप स्ट्राइक में, were you part of the strike? No. नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं था. वो तो एक्टरों का था स्ट्राइक. हम इंस्टीट्यूट बंद हो गया, हम यहाँ चले आए. मैं सिर्फ पूछ रही थी क्योंकि क्या रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स का जन्म, that seed was planted there in FTI? नहीं, it was not my. See,
people think a lot about like कि मैं कोई सोशली बहुत ही कुछ क्रांतिकारी फिल्में बनाता हूँ, ऐसा कुछ करता नहीं हूँ मैं. क्या नहीं करते? आरक्षण आपने बनाया, उसके बाद अगर आप क्रांतिकारी नहीं तो फिर क्या है? फिर मैं कहानियाँ कहता हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल द स्टोरीज विच आर ऑल एग्जिस्टिंग or which develop over a period of time. You know, I mean, it's kind of, for me, the interest is, like say for example, right now, for the past 5 or 6 years, I've been completely consumed by the idea as to why democracy all over the world has failed. It's working in a way. Failed ki evolved? It's completely failed. It's not working. No, it's not working because, you know, see, right from all over the globe, there is a sense of insecurity in the system. You know, people have... Those are the interesting stories, no? So they have stopped trusting the way democracy is. It's a development. It's. I think something new will happen. When something works, an artist finds it boring. When there is disruption is when an artist finds something interesting. All your stories are about disruption. All your stories are about conflict. And not just in the mind, in society. There can't be stories without conflicts. If there is no conflict, there is no story. See, Damul was my first... It was very disturbing film, let me be honest with you. But you can imagine how disturbed I must have been as a child to have seen most of those things that I showed in that film. Yeah. The whole untouchability, caste system, bonded labor, everything. Like, you know, my father of my Pardada, he had settled the Harijan Basti who could not work anywhere else but the fields that was owned by my Dada. So it was called Chamtoli of my Dada. And all those Harijans who kind of like, you know, they used to work but they had no right to take water from the well which was, you know, designated for the Brahmins. But this was seen, like अगर कभी गलती से कोई चढ़ गया तो फिर आग से उसको शुद्ध करते थे कुएं को, तो फिर पानी भरते थे. I think many of us might have seen it but not realized it. We come from a position of privilege not to realize how horrific it is. It later comes back when you are... Yes, when you do start understanding the equations, when you do start seeing the way the things are developing, then those stories begin to kind of like, you know, haunt you. And it was the second film that you made, right? Feature film. The first script that I had written was Damul, but the first film that I made was Hippe Purre. That happened just kind of like, you know, over a cup of tea. That was Javed Saab? No. Hippe Purre I had worked with Gulzar. Gulzar Saab, okay. You know... How do you compare the two experiences? Damul खुद आपने लिखा, खुद आपने एक्सपीरियंस किया, आपकी खुद की स्टोरी, डायरेक्टिंग इट, मेकिंग इट, एंड देन हिप्पी पूरे की स्टोरी भी हमने डेवलप की थी. स्क्रीन प्ले में हम गुलजार साहब के साथ बैठ करके लिखे थे. उस वक्त पहला स्क्रीन प्ले था और उस तरह की सेंसिटिविटी और उनके साथ दोस्ती हो गई थी. और फिर हम लोग he was also writing the songs of the film, so it worked well. But Damul was something. Post Damul, most of the films I've written myself. दामुल के बाद मैंने परिणति बनाई, which was a story in which is my favorite film. In fact, it is a very a folk tale set in Rajasthan. The original story was written by Bijay Dande tha, and I came across that story, and there was a collaborator on that screenplay with me. I'm forgetting the name. And परिणति के बाद हमने बनाई मृत्युदंड. वही मैं कह रही हूँ that even a film like from Hippe Pure to Damul to Pariniti to Mrityudand, they were all, there seems to have been, you know, this urge to tell the story of the deprived, of the crushed,
of the almost hopeless till that period, at least till you came to Raajneeti, I would think. There was that period in your life. I didn't look at it that way. You picked the stories like that. There must have been some subconscious thing. It's the social change which was brought about by two very important events in Indian history, social history, which was the open market economy and the mandalization of the society. Okay. Both happened nearly at the same time. 88, 89 से आपको उससे पहले मंडलाइजेशन जब शुरू हुआ था, अच्छा। which the effect began then. See what happened, that the moment these people, the backwards, these OBCs, they got the political power and they began to enjoy the rule of majority. The economy opened when Narasimha Rao opened the economy in 91 and 92. So there was money available, and there was the power had shifted from the privileged class to the backward class. Yeah. So the right to spend, that balance shifted, and what havoc it brought about in terms of our change of system, for good, for bad, whatever. So Mrityudand is actually that. Mrityudand is when the traditional Zamindar Suvansh Singh has become incapable, his lands are being sold, and who are buying his land? Yeah. The OBCs, Ompuri. Yeah, those who were not allowed to own land. They are the ones who had worked hard, persevered, Tilling and the had land. the money. They were doing their business, and began, because at that point of time, a child used to introduce, "Mere baap kya hai? Zamindar hai." And he used to feel proud about it. But then the next generation of Biharis started, "Mere baap kya hai? Thekedar hai." So the balance shifted from Zamindar to Thekedar. So there was this Thekedar who began to kind of override the whole Vinay Singh's character, who eventually gets into Madhuri Dixit, who's a widow, into her kind of realm. So the Ompuri character, slowly after buying the land of the Zamindar, also gets into a relationship with the women of the Zamindar. So one common denominator from every class which continues to suffer in spite of all the changes that is happening are women. Yeah. So I tell the story of three. They had no agency of their own, ना? वो क्या करते? वो तो हमेशा नहीं रही है. तो वो उनकी तीन औरतों की कहानी, which is शबाना आज़मी and Madhuri Dixit and Shilpa, इन तीनों की कहानी के through I have told the story of the kind of opening of the market and the politics and power and things. Have you met, at least at that stage, did you meet those actors of the Mandal politics? Did you meet with Mulayam Singh ji? Did you meet with Lalu ji? I met everybody. I was very actively observing and sometimes being part of the JP movement. We were all very young at that point of time, and we were already in our colleges, so we knew that whatever was happening, and I was able to recollect and connect the things when I made Mrityudand. आप बाहर से थे? Were you part of the JP movement, on the socialist movement? बाहर से, or were you very much part of the student agitations and things? नहीं. No, I was not actively kind of protesting or joining the protest, but I was part of it in the sense that I was, everybody was, romancing with the left and socialism at that point of time. If you don't do that in your student days, what are you, frankly? What are you, frankly? Yes. So the whole socialist, Nehruvian kind of attitude to life, and the whole sympathy with the Naxals, with that all, because when I made a film called Damul, I was considered to be close to Politburo or something like that, and I have had meetings with them. There was some issue also with that, no? Certification का था या glorification of violence है, कुछ था उस film में ना? I remember vaguely that I saw it in Mahadev auditorium में.
थिएटर में नहीं देखा था मैंने. I saw it. थिएटर में रिलीज भी नहीं हुई. नहीं हुई ना. हाँ. That's why it was premiered on Doordarshan. Okay, I saw it in that auditorium. There was a special screening, and I saw that, and it was my first thing was like, oh my God, I've seen this. How come I didn't react? I have seen, and then it occurred to me as to when I had seen it, because my first visit to Bihar was in '77. Mm-hmm. And it was a very significant part in history to have been in Bihar in 1977. Yeah. You know, and of course I was a child, so I didn't know what was happening. But you know, it stays in the recesses of your mind कि कुछ देखा था, कुछ इस किस्म का unrest उस time में. You have seen it, experienced it in some way. Maybe in a position of privilege. But your films make one think. Sometimes it's not a convenient thing also. You know, all that happens after I meet. I don't keep on repeating this. I'm only looking for stories. And you know, for me, the challenge is... Don't protest so much, Prakash ji. Don't. No, but Smita, the challenge is that I have to hold the attention of the audience. Yeah. I understand or feel. It takes me a lot of time. ये अभी एक फिल्म जो नेक्स्ट अगली फिल्म जो मैं बनाऊंगा, जिसकी टाइटल मैं आपके ज़रिए बता देता हूँ दुनिया को. उसकी टाइटल है जनादेश. अब बताइए, अब जनादेश अगर पॉलिटिकल नहीं है तो फिर क्या है? But Janadesh is not political. Janadesh is about understanding democracy. Now, this is, if I start from this point of कि मुझे democracy पे कहानी कहनी है एक, तो फिर नहीं ढूंढ पाऊंगा. कहानियाँ इसमें मिलेंगी जिसके जरिए शायद ये बात निकल के आए कि भाई what has really happened to democracy. Okay. ये कोई आसान बात नहीं है कि एक ही समय में हमारे आपके जानकारी में साउथ ईस्ट एशिया से लेके इंडिया से लेकर के यूरोप से लेकर के और अमेरिका तक एक तरह की भावना, मेजॉरिटेरियनिज्म की भावना, जहाँ की जो मेजॉरिटी समाज है वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है. इट्स नॉट कोइंसिडेंस. It has happened. Yeah. That there is a polarization of the right. Even in a place like Argentina, 40 साल socialist rule के बाद, What they is have taken a... परसों क्या हुआ नेदरलैंड में? Yeah. Can't so imagine. this is the, you know, क्योंकि माइनॉरिटी को जिस तरह से डेमोक्रेसी ने ट्रीट किया है वो सही नहीं था या सही था या उसने ट्रीट नहीं किया. क्योंकि हमारे यहाँ ये रिजर्वेशन की बात करते हैं कि मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 13% का रिजर्वेशन दिया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को. क्या 13% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बेनिफिट हुआ है? Is that what the film is about, Janadesh? No. No. I'm just talking in terms of कि ये जो benefits हमने दिए हैं minorities को, that benefits have not really made the society equitable. It has not been able to function. And it has, on the contrary, probably made the majority very disturbed. क्योंकि ऐसा अचानक से नहीं हो जाता है. ये चीज़ें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. अभी डेमोक्रेसी का सबसे पहला स्तंभ क्या है कि मेजॉरिटी की रूल होगी. चाहे एक वोट भी ज़्यादा उसको आ जाए वो जीत जाता है. मेजॉरिटी जिसकी होती है उसका रूल. आदमी की प्रवृत्ति क्या है कि जब आपके पास ताकत आएगी तो आप ताकत के हिसाब से काम करोगे. एक कहावत भी है कि मेजॉरिटी इज नेवर राइट. You will always try to protect your majority. In the process of protecting majority, what will you do? You may harm the minority. You may create, situations where the minority will not be kind of. For me, it is never trying to be judgmental. Exactly.
That's what I was trying to get to. Never. Yeah. Because for me it is, अच्छा जो हो रहा है कि क्यों हो रहा है. हाँ. अगर ऐसा हो रहा है जैसे कि डेमोक्रेसी में जब बात करते करते समझ में आए कि यार कल तक हमने अपने फिल्मों में, अपनी कहानियों में पॉलिटिशियंस को करप्ट बताया, पुलिस को करप्ट बताया, जुडिशरी को करप्ट बताया, प्रशासन को करप्ट बताया. मेरी खोज में तो मैं देख रहा हूं कि जनता सबसे ज्यादा करप्ट है. कहने को हम कहते हैं कि हु इज द मालिक ऑफ द कंट्री इन डेमोक्रेसी? जनता. उसी को कहते हैं ना, हम वोट मांगने जाते हैं, तुम मालिक हो, हमको वोट दो. उसकी मलकियत कितने देर की रहती है? वोट देने तक, डालने तक, 3 सेकंड तक, बटन दबाने तक. जी. तो ये डिकोटमी है डेमोक्रेसी की. अब जब मैं गहरे पानी बैठता हूं और ढूंढने की कोशिश करता हूं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई, भैया देखो तो जरा, तो मुझे लगता है कि जनता तो बड़ी खुश है. आज सबको सब कुछ फ्री चाहिए, बिजली होनी भी चाहिए, पैसे देंगे नहीं. देन यू एज अ पॉलिटिशियन यू स्टार्ट फीडिंग टू दिस आइडिया. तो कर्नाटक में 5 वादे कर देते हो, राजस्थान में 7 वादे करते हो. दिल्ली में भी तो, और दिल्ली में तो वादों की झड़ी लगी हुई है. तो डेमोक्रेसी की जो विकृति हुई है, इससे कहानियां निकलती हैं. That's what I was. You made a very interesting point when you said, "I'm not judgmental." You, as a filmmaker, that should not be something that you do, which is judgmental, right? You have to be. As me, as a journalist, I shouldn't be. I should be just telling people and letting people make the judgment. But कहीं ना कहीं वो bias या वो inbuilt values जो हैं आपके, वो आ जाते हैं उभर के, and especially of a filmmaker, where your sympathies lie will come out. For example, when you were saying that in probably in the early part of your filmmaking career, you would have thought corrupt politician, corrupt police, corrupt IAS, corrupt administrator, corrupt law system, your lawyers, your judges, सब corrupt हैं. लोग जो हैं वो they are innocent. Comes Gangaajal, and the sympathy is with the cop. You understand why he is like that. You understand that he's trying his best. It doesn't work. That was such a memorable film. Smita, it is the society which eventually influences everything. Time and again I have said that in all my films. Without being, you will get the police you deserve. We are getting the governments we deserve. We are getting the system, and very quietly the people silently they manipulate everything. That is Janadesh. Smita, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ. I know. और हर चौराहे पे जहाँ लोग खड़े होते थे, मोटरसाइकिल पे खड़े होते थे, वेट करते रहते थे. हाँ, हमारा काफिला आ रहा है, फटाक से पॉकेट से वो मेरा झंडा निकाल के उनके मोटरसाइकिल पे लग जाता था. मेरे नारे लगने शुरू होते थे. जैसे आए, हमने थोड़ा भाषण दिया वहाँ पर, उन्होंने पीछे से हमारे लोगों ने उनको पेट्रोल के पैसे बांटे. थोड़ी देर तक नारे लगाते हुए हमारे साथ चले, फिर अपनी मोटरसाइकिल घुमा ली, वापस आकर के फिर वही जम गए. दूसरे का आता है, दूसरा झंडा लगाते हैं. आप पार्टी बदलते हो, नेता कहते हैं दल बदलू है. जनता तो दिन में 4 पार्टियां बदलती है. 2 बार इलेक्शन लड़े आप, दोनों बार देखा ऐसे ही. मैं एक जो सारी चीज़ें है बेसिकली दे आर मैनिपुलेटिंग. हमारे सबसे बड़ी ये जो आज मोदी जी कहते हैं, और ये जो कि एक इलेक्शन एक साथ होना चाहिए, वो सबसे बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल होना चाहिए. नहीं तो क्या हुआ है कि इलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन हैज़ बिकम लाइवलीहुड फॉर अ होल लॉट ऑफ पीपल. कुछ नहीं करते, खाली इलेक्शन लड़वाते हैं. कभी मुखिया का इलेक्शन हो रहा है, कभी जिला परिषद का इलेक्शन हो रहा है, कभी इंडस्ट्री बन गई ना. हाँ, कभी एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, फिर एमपी का इलेक्शन होता है, फिर बाई इलेक्शन होता है. इंडस्ट्री बन गई है. वो आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे. अभी तक 10 साल हो गए मेरे
को पिछला इलेक्शन लड़े हुए 2014 में लड़े थे आप. हाँ. फोन कर करके हमको बोलते रहते हैं हम आपका झंडा घुमाए थे सर. What happened between you and Nitish Babu? Nothing. I just stopped. I mean, the 2014 elections, I didn't want to contest. I had given up in 2009, and I had done my bit. I wanted to kind of like, devote 10 years to public life because I really sincerely saw that the MP, Member of Parliament, who is elected from a large constituency and has access to almost every resource. Because when you sit in parliament, if you really want to do, you can approach every section of the nation and beyond in terms of resource. And you can do things in your in your constituency. अक्ल ही नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वो क्या कर सकता है. उसको पता ही नहीं है. 5 करोड़ जो मिलते हैं खर्च करने को, 5 करोड़ के बियॉन्ड वो सोच ही नहीं सकता है. I just kind of like, even while we were preparing for 5 years, we were working a lot, like, in the constituency, and we were able to generate a lot of jobs and things like that. I just wanted to kind of like, professionally show what exactly a member of parliament can do in a constituency. नहीं हो पाया. तो वो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कोई रिटन एग्जाम अगर होता एमपी बनने के लिए तो वो मैं जरा मेहनत करके जीत जाता. पर जनता का वोट चाहिए होता है आपको. तो 2024 नहीं करना, इलेक्शन नहीं लड़ना. You don't want to go back to politics. पिछला इलेक्शन भी नहीं लड़ा. I know. I have completely never been to the constituency after that. But things have changed, right? What do you think about... Things may change. I mean, I have absolutely no interest in... Are you following what Prashant Kishor is trying to do there? I am following everybody. I am following Nitish Kumar, I am following Prashant Kishor, I am following Mr. Modi, I am following Amit Shah, I follow everybody. Something makes me feel that I think people of Bihar are just like done with Nitish Babu. They're bored, they're tired, and they want some new leadership. And that is something that I feel that Prashant Kishor is sensing. And that's why he went last year, a year before last, and he's been sitting there in Bihar. I, again, will not try to be, want to be judgmental because... It's just a point of view which I have. I have absolutely, I mean, what people are doing or thinking is something I can't tell. Yeah, that's true. Because tomorrow election happens and, they completely behave in a different manner. I have seen that happening with myself. What Prashant Kishor is doing, that he's making his contact with the ground. Jansampark Yatra and all that. And he is talking sense. But will that translate into political power or political affiliation? I have no idea. I can only say that, when he says that तुम 500 रुपया लेके एक पाउच लेकर के अगर वोट दे दोगे तो जो खर्चा करेगा वो अपना इन्वेस्टमेंट तो वसूलेगा तुमसे. तो you can't, it's exactly like the DGP of Bihar, ex-DGP of Bihar saying कि जब क्रिमिनल जेल से निकलता है उसको माला पहनाते हो तुम लोग तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हम क्राइम रोक लेंगे. फिर आप क्राइम जब होता है तो उसके खिलाफ मत बात करो. फिर I was just wondering at that time that in one of your films there was a controversy and I couldn't figure out कि कौन सा था. एक फिल्म थी ना जिसमें आपने विलन का रोल था ना, साधु यादव. You gave the name and then that got into Gangajal में. In that, and then Rabdi Devi's brother was Sadhu Yadav at that stage. But that was quite accidental. Accidental था. Quite accidental. साधु यादव पता नहीं कैसे मेरे नाम अटक गया था. लेकिन वो जब आ गई तो he took it upon himself. आपको फोन आया था उस टाइम लालू जी का या राबड़ी देवी का? उन लोगों ने मेरे पुतले जलाए, सिनेमा रोका, पटना में चलने नहीं दी पिक्चर. हाजीपुर लोग जाते थे फिल्म देखने के लिए. वो बहुत कुछ किया उन लोगों ने. तो मेरी हर फिल्म में कुछ ना कुछ हो ही जाता है. So which one, if I was to ask you, was Gangaajal a turning point in your career, you feel, or was it Raajneeti? No, I mean, Mrityudand was, okay. See, because what has happened in Mrityudand is that until then I was happy with doing pure cinema, telling my stories the way they are. Damul mein, Parinati mein. And many years later I did another film very recently, Matto Ki Cycle.
So that's pure cinema. What do you mean by pure cinema? I'm just coming to that. Where, one, there are two reasons you make films. One is because you want to tell a story. So you find the story and you tell it the way it is, and you don't care whether, it will find an exhibition or not, because you want to stay pure, true to the cinema, true to the story. So Damul was that. Okay. When I wrote the screenplay of Mrityudand, it was written in the same kind of, when it got approved by an FDC for a loan. But I realized, because the market had opened, new technologies had come in, it had become expensive, that you can't make a film in 12 lakhs. It will cost you at least 25-30 lakhs. You'll have to earn at least 40 lakhs to be able to recover. बन जाती थी फिल्में इतने में. पल्लवी जोशी को मैंने साइन भी कर लिया था मृत्युदंड के लिए, but I just couldn't make it. And then it just happened that Subhash Ghai, who I met him one day, and because I was already a double national award winner, so he just kind of was give me some respect and started talking to me and said, क्या बना रहे हैं? मैंने मृत्युदंड की कहानी उसको बोली, अरे यार ये तो बहुत अच्छी कहानी है, आप माधुरी दीक्षित को लेकर बनाओ. यार माधुरी दीक्षित कहाँ हमको मिलने वाली है और कैसे हम बनाएंगे इस फिल्म को? तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू माधुरी ऑन द सेट. वो धक धक करने लगा, वो गाना शूट कर रही थी और बीच बीच में आके मेरी कहानी सुन रही थी फिल्मालय में. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे शी सेड, आई एम डूइंग दिस फिल्म. एंड देन दैट स्टार्टेड. शबाना को पहले ही बात कर चुका था, फिर शिल्पा आ गई, फिर वो ओमपुरी आ गए, फिर ऐसे करके पूरा बन गया. फिर वो पैसे भी देने को लोग तैयार हो गए. और पर आप कैसे मैनेज करते हैं टू हैव सच बिग कास्ट, वेदर इन मृत्युदंड? मेरे लिए कास्ट नहीं होते, मेरे लिए एक्टर होते हैं ये सब, और मैं उनके साथ वैसे ही काम करता हूँ. ये पर सबके ईगोज एंड वो सब नहीं होता कि इनको मैनेज करना? किसी का ईगो नहीं हुआ आज तक, किसी का ईगो नहीं झेलना पड़ा, किसी का नहीं. पर ये तो बहुत नामी गिरामी लोग थे ना. हाँ, बट इनको भी तो हमारी चीज में विश्वास हो जाता है, तभी तो काम करते हैं ना. हाँ. मतलब सुनने के बाद. अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि मैं इनके साथ शूटिंग से पहले से काम करता हूँ. मैं सेट पे कभी एक्टर को डायरेक्ट नहीं करता. अच्छा, दैट्स योर मेथड. माय मेथड इज टू प्रिपेयर देम, टू इन्फॉर्म देम, टू लीड देम, टू help them out to create that character. I've seen like you were saying, वहाँ वो धक धक कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी गाने का, और फिर वो she was coming and listening to this really straight from the solar plexus वाली कहानी. हाँ, you keep taking actresses who people think are molded in that glamour, whether it was Katrina Kaif. In fact, when I came to interview you, all of you, and I was like, how can he make her do a deglamorized role? Will she be, because she speaks with an accent, how will she fit into a home, a joint family system in central India? वो कैसे कर पाएंगी? But she did it. Whether it was Manisha Koirala, how do you get these leading ladies who have a glamour image and then fit them into these roles? I don't do that. They have to do it. I only help them. I inform them. I weave out their world and I help them. I help them create their own characters. That's what I do. You don't enact a scene for them to do? Never. Okay. Because then they will all start aping me. Never ever do that. That's something that they have to develop. And it's best because they bring a lot on the table. If you just help them, you've informed them, because even with Mr. Bachchan, yeah, you've acted with him. I worked with him on 2 films. They prepare. If you encourage them to ask questions, they will ask questions. You give them time, and then you read, and you read not only the script but beyond the script. That's very trusting of you as a director, no? That you have 50 to 60 top-notch guys who are working with you, whether it's an Ajay Devgan, Nasiruddin Shah, Amitabh Bachchan, Katrina, all these people in your films, and you just let them be them. How? That's very trusting. No, let them find the character, not let them be them. Help them find the character. Okay.
So what do? You give a script? Did you give for Raajneeti? Did you give for... Script is just a very basic thing, but like, their character is not entirely written. We try to kind of go, we insinuate sense memory, and we try and sort of like, create a childhood, create parents, create scenes which are beyond the film. Ah, okay. Interesting. And then weave their story. So they come, when they come, they know who they are. जैसे रणबीर, you took him in a film. Now, वो बॉम्बे का अर्बन मिलियू का पढ़ा लिखा लड़का. Yeah, but he is an actor also. He has gone to the New York acting school, so he knows Stratus and sort of like, all the characters. And then, when you give them like Ranbir is the easier example. Say ये नवाब सैफ अली खान, वो अछूत का रोल कर रहा है आरक्षण में. Yeah, I mean, I would not think that Saif, who studied कैसे in a boarding नवाब school, है, वो अछूत का रोल कैसे करेगा? हाँ. बट ये सोचना कि अछूत जो है वो काला कलूटा ऐसा होता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है. करेक्ट. अछूत तो हम अंदर से होते हैं, उसको लेके जीते हैं. I always do that. Bobby Deol doing Baba's role in Aashram. Innocent looking chap. You'll trust him. But he's dark inside. Yeah. So this is good casting. Saif Ali Khan, when he says कि मैंने टट्टी ढोई तुम्हारे सर के ऊपर में, रेस की बात करते हो, मेरिट की बात करते हो, लाइन तो पहले सीधी खींचो. So it's what's there in what you're living with. So he doesn't know anything about affirmative action or आरक्षण or मंडल or anything. वो नवाब उसको पता ही नहीं है. दीपिका पाडुकोन, who is kind of like ideology उसकी जो है मैच नहीं करती सैफ अली खान से. Now these people, they are actors. I don't expect them to know or understand. It's my job. Do you purposely take them then? Is it a challenge? I only take actors. I don't purposely. I know that he has crossed the line. He is an actor. Now he is. If I mold him, if I inform him, if I help him find the character that he is playing, तो बात बन जाएगी. When you did Aashram, did you really think that it would click so much? It was again a different kind of a genre. You love experimenting, I've noticed that. See, it was a story which needed to be told. I mean, because हमारे the Hindu dharma and Sanatana Dharma and the philosophy that we have is so kind of like amazing, and it's so deep. And those who have achieved, they don't exhibit. वो तो शांत से रहते हैं, गुरु अपने जगह पे रहते हैं, आप जाओ उनसे ले लो. But I mean, there are a whole lot of exhibitionists who जिनको आधा मिला हुआ है ज्ञान, बाकी वो सब ऐसे. Then there are those who are exploiting. Yeah. क्यों exploit करते हैं? क्योंकि हम कमजोर हैं. The question would ask that why would you pick only Sanatana Dharma? Why don't you pick any other religion? वो आप कर लो, क्या दिक्कत क्या है? दूसरा the भी तो. fear of when you pick up a religion which there would be a retaliation. That Hindus are open to. नहीं, इसमें वाई का क्या जवाब दूं? वो भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए. उसकी भी चीजें बनी हैं. मैं इसके बारे में, अपने धर्म के बारे में, क्योंकि मैं उस धर्म का हूँ, मुझे पहचान है. जब लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है कि हमारे धर्म को सही नहीं बता रहे हैं. आप ये सब लोग आज जेल में बंद हैं. किस वजह से बंद हैं? किसके बारे में कह रहे हैं आप? मैं आशाराम बापू के बारे में बात कर रहा हूँ, राम रहीम के बारे में बात कर रहा हूँ, नित्यानंद के बारे में बात कर रहा हूँ, जो छोड़ के भागे हुए हैं, अपना कोई देश बना के बैठे हुए हैं. क्यों भागे हैं? क्यों? और हमारे इतने बहुत सारे गुरु हैं जो स्थापित हैं, जो हैं, सियर हैं, शंकराचार्य हैं, सब हैं. हम तो जाते हैं उनके पास. Did you see Sacred Games? Do you think that they did justice
in showing that? No. Again, it's all. I haven't seen Sacred Names completely. I saw just part of it. But if there is something which you are exploiting, then the stories are there. There are conflicts there, and that's inherent. What do you have to say to the view that OTT platforms give a lot of scope for telling a story in different ways, longer formats? You don't have to finish the movie in 2 hours. So the filmmaker gets a lot of time and scope. So it is also very difficult, because then to expand those stories, to keep them interesting, to keep them engaged, that's also, it's probably true, but what it has done for me as a viewer, I'm just a viewer, I'm telling you, my thing is that now I find it irritating that वो जब 2 घंटे की फिल्म में I feel flesh out नहीं होता character. वो बड़ी जल्दी he's falling in love, बड़ी जल्दी he's getting angry, बड़ी जल्दी उसकी marriage खत्म हो जाती है. पर फिर कहानी ठीक से नहीं कही गई है, इसका मतलब है. अगर वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक डेवलपमेंट और सारे चीज़ें रस नहीं मिला है, 2 घंटे में भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. हमारी तो कोशिश रहती है, हमारा चैलेंज अगर नहीं हो पाया, दैट मीन्स आई हैव नॉट बीन एबल टू सक्सीड. Okay, I was thinking that it's because OTT has spoilt it for me, where I want more fleshing out of the character and a gentler pace to tell a story. It could happen. They are both valid. I have done both of them. Yeah. And I've just completed another web series called Sankalp, which deals with, part reality, part fantasy, which is like, there is a whole aspiration of, which a section of the society is dying, like, to achieve something, like, IS banna, IPS banna, IRS banna, and services mein jana. And there is someone who has the devious mind of using this whole thing to exploit a system or whatever it is. So those are things which are... Who's acting in those? Can you tell us, or is it under wraps? No, it's the Nana Patekar is the Chanakya. Wonderful. And there are a couple of very, very good actors. In fact, quite a few. Jishan is doing a very important role, and Neeraj Kabi is there. Okay. Sanjay Kapoor is there. Kubra Seth is there, and there's a good kind of cast. And who are the actors who you feel that you are able to gel with? Of course, your contemporaries are there. You've acted with them. I people keep telling me that Ajay Devgan. I have worked in 4 or 5 films because coincidentally, kind of like, things worked out and he suited the characters. I am happy with every actor. I loved working with Bobby, Ranbir, Bachchan ji. I have worked with so many actors, and I really have enjoyed working. And people, acting, because I've trained myself as an actor. Tell us about that also. I have continued to be able to communicate with the actors, to help them find the character. I started doing workshops, acting workshops, quite some time back. People don't know about it, but I have done internationally. I mean, in Netherlands, Vienna, Paris, all. Yeah. I read your resume when in one of these institutes where you did the workshop, and it was written so beautifully. And then when I was researching, I said, not one article did I find in India which encompassed or which saw you the way that introduction to you was. It was written so well. Somebody has obviously seen your film and seen a link between all that. In fact, I had written it down also, in which it said that has made a name for himself, a social commentary on issues that confront India. Likha tha usme, obviously, like caste struggles, power politics, corruption, resistance movements. The way they have linked all that you did, it was written so beautifully. And then I realized that kabhi we see it over the years. I've seen your work for 20, 30 years. Aapne jo kuch kiya. I can't collate it, but somebody who has seen it together would probably see a common thread. My only thing was that, class struggle and Bihar
UP and of course the Mahabharata. Tell me, why is it that Mahabharata as a story interests almost every filmmaker that I know? What is it about that epic? Every story connects with Mahabharata. Every character connects with Mahabharata, because Mahabharata is an ensemble of every kind of human emotion, human character, human drama that you can think of. It's all there. Sometimes like in Raajneeti, I drew characters from there. Characteristics also. So they become like there is an Arjun somewhere, there is a Bhim somewhere, there is a Yudhishthir somewhere, there is a Duryodhan somewhere, there is a Shakni somewhere, there is a Karn somewhere. It all is there. It manifests in our own lives, and sometimes we are playing different roles ourselves. So for us, it is like, for me, it is amazing to kind of like to meet people, to talk to them, to understand, and to every side. हर जगह कुछ मिलता. कल बात कर रहा था किसी के साथ में, एंड somebody said कि जानते हैं प्रकाश जी, दूध जो है ना वो घर घर जाके बेचना पड़ता है, और शराब आप अपने घर में बैठिए, सब लोग आकर के ले जाएंगे. बढ़िया. It's kind of how true, and it just see the deeper meaning of this. So wisdom exists, and this was not somebody who learned. Somebody जो रिक्शा चलाता है, वो उसके कोई कवि मधुशाला के ऊपर कविता नहीं लिख रहा था. नहीं, ऐसे ही कि वो क्या विजडम है. तो मुझे बहुत मजा आता है लोगों से, इसीलिए मैं कहीं भी घूमता रहता हूँ, कहीं भी चलता रहता हूँ, किसी से बात करता रहता हूँ. गांव में फोन करता हूँ तो पूछते फलाने गैया बियाई कि नहीं रे. तो मतलब वो to remain connected and to be able to find the stories from there. इसीलिए कहता हूँ कि मैं कोई जनादेश बना रहा हूँ तो कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं जो कहानियां हैं यहाँ पे, कि अब तुम कैसे समझोगे कि उस गांव में मनरेगा के नाम पर 3 बार पैसे आए, वही सड़क 3 बार बनी, और सड़क आज भी नहीं है. और जाकर के जब मैंने हल्ला गुल्ला शुरू किया इलेक्शन के ज़माने में कि सड़क नहीं बन रही है और पैसे सब खा गए फलना चिलना, तो गांव वाले खड़े हो गए, चुप रहिए आप, हमको कौन सा सड़क चाहिए, 4 पहिया चलाना है. पैसे तो आते हैं, कम से कम 50% तो मिल जाता है ना हमको दस्तखत करके बिना काम किए. आप काहे को बीच में बोल रहे हैं? Do I see that as in your next? अब वो छोड़िए, मैंने मतलब अब आप सोचिए कि मतलब मेरे लिए तो ये कहानी है. ये हाल है हमारे देश का. ये जनादेश में आप डालेंगे ये वाला सीक्वेंस? अब देखिए कि sum total of the matter is that something is happening, and something is happening for me to be able to find as to, oh my God, why is it happening the way, and what is it doing to our society. So you don't want to solve that issue at that time, or you feel मैं क्यों जजमेंट करूँगा, मैं सॉल्व करूँ, मैं कुछ सब झंडा उठा के थोड़ी चल रहा हूँ. I must be able to connect these stories and tell them as interesting stories. That's the difference. See, this is why there is so much that you do which is linked to something that I do also. Do you tell the story and hope a change will happen, or hope to कोई जागरूक हो जाए, मतलब जनता या कुछ भी. And then there are some journalists who take that step आगे and they become activists. You tried that. You're a storyteller. Something moved you. You tried to be part of politics, but नहीं हुआ. हाँ स्मिता, मैं स्थायी विपक्ष का व्यक्ति हूँ. कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस की सरकार भी मुझे पसंद नहीं करती थी. जब मैंने राजनीति बनाई तो स्पेशल कांग्रेस के लोग आए थे, वो संसद सर्टिफिकेट के बोर्ड की व्यूइंग में फ्लाई करके आए थे, और नहीं दिया मुझे सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको लगा कि सोनिया गांधी का जो है वो कैरेक्टर है कतरीना का. कुछ नहीं था फिल्म के कुछ अंदर. नहीं, जिस वो हाथ जो हिला रही थी बस. और नहीं दिया उन्होंने. हाँ. मुझे जाना पड़ा ट्रिब्यूनल के पास. ट्रिब्यूनल ने पिक्चर देखने के बाद में बोर्ड के मेंबरों से पूछा, क्या है इसमें भाई जो आप नहीं दे रहे हो. मैंने फिर थ्रेटन किया, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा. मेरी कोई ऐसी फिल्म नहीं है. आरक्षण के समय में कांग्रेस की सरकारों ने हमारी फिल्म बैन कर दी. मायावती ने भी बैन की, पंजाब में भी बैन हुई, आंध्रा में भी बैन हुई, यहाँ भी महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी. तो मैं हमेशा स्थायी विपक्ष का व्यक्ति रहा हूँ.
भाजपा की सरकार आई है, मैंने सरकार के साथ मिल करके खड़े होकर के कभी नहीं बोला अच्छा काम मोदी जी करते हैं तो अच्छा होता है, अच्छा काम नहीं करते हैं कभी तो नहीं होता है। आपने कभी भी मेरा कहीं बयान नहीं सुना होगा कि मैंने कभी किसी क्रिटिसिज्म किया, लेकिन मैं खड़ा हूं कि आपकी अगर सही चीज़ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मेरी कहानी में आएगी वो चीज़। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो कौन सी कहानी में हम झलक देखें? अब पता नहीं, लेकिन जनादेश 100% जनादेश। लेकिन ये जो चीज़ है, क्योंकि ठीक है ना, यही होगा ना कि मुझे पद्मश्री नहीं दोगे, सरकार मुझे पुरस्कार नहीं देगी, सरकार से मैं लिस्ट निकालूं आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं? बट जो भी मिले हैं वो फिल्मों पे मिले हैं, फिल्मों पे मिले हैं। हाँ। फिल्मों पे मिले हैं। व्यक्तिगत मुझे कभी सम्मान किसी सरकार ने, चाहे बिहार की सरकार हो, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि कोई, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कल आपके खिलाफ बोलूँगा अगर गलती होगी तो। हाँ। तो मैं अपने, अच्छा होने भी चाहिए, मेरे जैसे लोग होने चाहिए कि आप जो भी सत्ता, क्योंकि जब सत्ता में आप आते हो ना, हाँ। तो आप गलतियां करोगे ही करोगे। दैट्स ट्रू। नहीं, बट जैसे आपके पास शक्ति होगी, हाँ। आप शक्ति को बचाने के लिए गलतियां करोगे ही करोगे। दिस इज, ये स्वभाव है मनुष्य का। परिवार का भी जो मुखिया होता है वो यही करता है। आप जब कह रहे थे ना अबाउट द हाउ इन बिहार वो मोटरसाइकिल में जाके बदलते हैं, कवरिंग वन इलेक्शन आई नोटिस्ड विद शत्रुघ्न सिन्हा, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे 11-12 बजे तक। ही डिडंट इवन नीड टू कैंपेन, he would just go out in the streets and people were like, oh wow, what a man, vote nahi denge. He lost the election. But what is it about film actors that when they come out into the streets, or even with Hema Malini when she came out, people were like, when I went to interview, they say यहाँ पे बंदरों का वो है, दिक्कत है, वो सब चीजें तोड़ देते हैं, देंगे, पर वोट दे देते हैं हेमा मालिनी को नहीं देते हैं। हाँ, बीजेपी को। बट दे वुड कम आउट टू सी हर। शत्रुघ्न सिन्हा भी जब तक लहर के साथ चल रहे थे तो वोट मिलता था उनको। हमारे यहाँ राजनीति जो है ना, वो एक अलग तरीके की राजनीति है। वो शायद हर जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ ही है। जब वो शीर्ष पे मजबूत आदमी होता है और वो हवाओं का रुख बदल सकता है तो ले जाता है वो। But why is it बिहार hasn't done it? मतलब उत्तर प्रदेश में तरक्की आ चुकी है, लेकिन बिहार में अभी भी इंडस्ट्री नहीं है, हाँ, एजुकेशन नहीं है। It's still the money order economy. लोग बाहर जाके कमा के आते हैं। यूपी is changing. Has changed a lot. Has changed so much. हम आज इतनी फिल्में शूट करते हैं यूपी में। अभी मैंने आश्रम शूट किया यूपी में, अभी मैंने मट्टो की साइकिल यूपी में शूट किया, अभी मैंने एक और सांड की आँख थी फिल्म, वो भी मैंने वहाँ शूट, और हर रोज शूटिंग। अभी परसों बनारस में था मैं। एग्जैक्ट, आई वाज कमिंग टू बनारस। इट्स, इफ यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड और यू रिमेंबर योर यूथ, क्या 5-7 साल पहले का बनारस और अभी का बनारस देख लो आप। मतलब मेरे को लगता है सैकड़ों साल से एक ही किस्म का बनारस था और अब बदल गया। नहीं, हमारे बिहार के सभी, इनफैक्ट बहुत गया गुजरा है बंगाल, बट बंगाल भी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है बिहार के मुकाबले। बिहार में हुआ ही नहीं। Who do you blame for this? किसके लिए? आई थिंक हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है, हमारे जो बिहार के बिहारियों के अंदर जो वहाँ पर सोच है। अब बड़ी हिम्मत करके 12 साल पहले मैंने वहाँ एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा और मॉल बनवाया पटना में, पहला। अच्छा। वो आज तक चलता है, बढ़िया चलता है। वो हम बड़े जतन से उसको चलाते हैं, बहुत लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मेंटेन करके चलाते हैं। लेकिन दूसरा कोई नहीं बना सका। पर फिर भी आपकी फिल्में जो हैं, इट्स स्टिल होपफुल, देयर इज एन एलिमेंट कि कुछ मैं कर सकूं। At least that's what one gets, that when you go for a Prakash Jha film, you feel that it's set in Bihar and there is a cry of hope from the filmmaker. But बिहार को लेकर के मैंने 2 ही फिल्में एक्चुअली बिहार में बेस की, गंगाजल और अपहरण। नहीं, बट सो मेनी, दामुल वगैरह तो सारे। दामुल तो खैर बिहार की ही थी। हाँ. दामुल कुड हैव बीन इन यूपी आल्सो, बाउंडेड लेबर जहाँ था वहाँ हो सकता है। इट कुड बी आंध्रा आल्सो। बट राजनीति कहो या आरक्षण कहो, कोई बिहार की कहानी नहीं है। बट इट वाज यूपी एंड आई मीन इट्स द सेम। हिंदी बेल्ट। हिंदी बेल्ट। कुड बी एनीवेयर इन हिंदी बेल्ट। जी।
That is that you like to reflect that in your film ज़्यादातर. क्योंकि वो समझता हूँ मैं. वो समझता हूँ. अभी जब आप पूछते हो कि आप दूसरे धर्म के ऊपर फिल्म, मैं दूसरा धर्म नहीं जानता हूँ यार, मैं अपना धर्म जानता हूँ. हाँ. मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म समझता हूँ. हिंदू में जो अच्छाइयाँ होती हैं उसकी अच्छी बात करता हूँ, जो बुराइयाँ होती हैं उसकी बुराइयाँ की बात करता हूँ. मतलब वो एक बात है. बट दूसरा नहीं समझता हूँ. जिस दिन समझ जाऊँगा बना सकता हूँ. आप ये जो 2 OTT प्लेटफॉर्म्स पे 2 बना रहे हैं, जनादेश इज अ फिल्म और इट्स अ सीरियल? नहीं, जनादेश इज अ फिल्म. Is a film. And Aashram was in OTT, and which is the other one that you're doing in Sankalp. OTT? Sankalp. While making these two things, were they simultaneously happening, or No, one after the other. one after? You do one project at a time? Always. Always one project at a time. Writing and thinking and discussions go on multiple projects, but shooting and making is one at a time. What do you have to say to this thing of the violence and the depiction of sex and violence in OTT? People feel that it needs censorship. The current way of giving certification is not really working when it comes to OTT. I think it is very irresponsible. Forget about censorship. Censorship में तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ. बट खुद का सोचो ना यार, कि किस तरह का समाज चाहते हो, किस तरह का घर चाहते हो, किस तरह के लोगों के साथ बैठना चाहते हो. कम से कम वैसा तो बनाओ. क्योंकि ईमानदारी की बात है कि आप सेक्स भर देंगे ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चीज़ चल जाएगी. वायलेंस भर देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चीज़ चल जाएगी. इवेंचुअली चलती कहानी है और बार बार प्रूव होता है ये. एक समय आया था जब बड़े भोंडे गाने जो हैं वो चल पड़े थे, लेकिन वैसे ही गिर के ख़त्म हो गए वो. समाज में चाहे जैसा भी समाज हो, एक अजीब तरह की राइटियसनेस और क्लेंजिंग प्रवृत्ति है. कुछ देर तक हो सकता है कि वो उद्वेलित हो जाए, बट देन दे विल क्लीन एवरीथिंग. दे विल ओनली, दैट्स व्हाई होप, नो मैटर व्हाट we say, the whole divisiveness or hate or all those things that you see in social media, but eventually, Smita, it will be the right thing and the hope for goodness. The self-correction. Absolute self-correction. The society will continue. I always feel, if Modi ji is continuing to rule the hearts of the people, then there must be something good about it. He must be giving comfort to a whole lot of people. Absolutely. The day he stops giving that comfort, he will not be there. So then you do believe in democracy. It's not as if... There is nothing better than democracy. Nothing. I have tried to study and examine. But, the form of democracy can be changed. What I believe that, it's not necessary that there should be a parliament of the winners as well, only. Well, losers also have to have a voice. तो पार्लियामेंट में अभी आप समझते हैं कि सबकी आवाज़ सुनाई नहीं देती या सुनना नहीं चाहते लोग? क्या हो रहा है फिर? जनादेश का पालन नहीं हो रहा है क्या? नहीं, एक बन गया अपना, एक अलग तरीके का बन गया. पार्लियामेंट में किसकी आवाज़ है सुनाई पड़ती है, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती. पार्लियामेंट हमारे यहाँ वो फंक्शन ही अलग तरीके से करता है, बिकॉज शायद उसकी ज़रूरत भी है. बहुत सारी आवाज़ें हो जाएंगी तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा. लेकिन सोशल डेमोक्रेसी एक जो है ना, इसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत जगह हो रहे हैं कि हमारे को क्या चाहिए वो हम सोसाइटी मिलकर डिसाइड करे और पार्लियामेंट को बताए कि भाई ये करो. फिल्म इंडस्ट्री में देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक ऑफ दैट पीपल डोंट स्पीक आउट ऑन इश्यूज. व्हेन आई स्पीक टू filmmakers, when I speak to actors, they say कि हमें बॉक्स किया जाता है क्योंकि ट्रोलिंग इतनी होती है, सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इम्पैक्ट इतना होता है कि अगर बोलो तो दिक्कत, ना बोलो तो मुश्किल. सो व्हाट डू यू डू? यू गेट स्टक. मेरा तो जो देख रहा हूँ कि अगर फिल्म अच्छी होती है ना तो कितना भी सोशल ट्रोलिंग कर लो कुछ नहीं होता. लोग जाते ही जाते हैं. ये बार बार हुआ है. बट फिल्म्स आती नहीं है ना कुछ लोगों के पास. इफ़ दे आर पॉलिटिकली एक्टिव, इफ़ दे स्पीक आउट ऑन इश्यूज, वो इट्स बिकम्स लाइक अ सेल्फ बॉयकॉट. If you there are some of us who
विल स्पीक ऑन अननेसेसरली ऑन एवरीथिंग. वो बिना मतलब का क्रिटिसिज्म, माने जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में तुम अगर विवेचना करके बात करोगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा. लेकिन कुछ भी करोगे मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, तो फिर ये गलत है. गलत हो भी जाए तो क्या उनके काम पर ये असर पड़ना चाहिए? You make mistakes, but should it be a reason enough for not getting film projects because you spoke on social issues? मुझे एग्जाम्पल दो एक भी. Suppose somebody, like for example, there are actors who are speaking on the Israel-Hamas war. जानकारी ज़्यादा नहीं है. They haven't experienced it. But based on media reports, Israel-Hamas war पे बोल गए. अब now there is a whole boycott against those people कि तुमने कैसे बोल दिया, तुमने कैसे ये फोटो डाल दिया. तो कौन ऐसा है जो उनको पिक्चर नहीं देगा या काम नहीं देगा? उनको क्या मालूम है हमास के बारे में और इसराइल के बारे में? करण जौहर काम देना बंद कर देगा, आदित्य चोपड़ा काम देना बंद कर देगा, राजकुमारी रानी काम देना बंद कर देगा, या मैं काम देना बंद कर दूंगा? आप किसकी बात कर रहे हो? जनता के ओपिनियन से काम थोड़ी आता है और जाता है. और जनता भी कितने लोग हैं? 5% लोग हैं जो ट्रोलिंग करते रहते हैं और जो सोशल मीडिया पे रहते हैं. उसकी क्या फिक्र करते हो यार? लोगों ने बोला इसकी फिल्म बायकॉट कर दो, उसकी फिल्म बायकॉट कर दो, शाहरुख की फिल्म बायकॉट कर दो. हुई क्या? और अगर फिल्म अच्छी नहीं बनेगी तो नरेंद्र मोदी की जीवनी भी नहीं चलेगी. सीधी सी बात है. विवेक ने ये दूसरी फिल्म जो बनाई थी, मैं तो समझता हूं कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उसने. बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छे से बनाई थी. लेकिन क्या ही हो गया, मोदी जी ने तारीफ की उस फिल्म की तो भी वो फिल्म नहीं चली. तो किसकी बात करते हो यार तुम? कंटेंट, कहानी जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता था 12वीं फेल की, कमाल की पिक्चर चली है. करेक्ट. इट्स द कंटेंट, इट्स द स्टोरी विच विल कनेक्ट विद पीपल. बाकी सब चीजें सोशल ट्रोलिंग मीडिया वीडिया कुछ नहीं है उसका मतलब. ये परसेप्शन है. आप है सोशल मीडिया पे? मैं बिल्कुल किसी पे भी नहीं हूँ. आज की बात इस बात से ख़त्म करें कि इस टेलीफोन का आविष्कार हुआ कि हम एक दूसरे से बात कर सकें. लेकिन टेलीफोन का इस्तेमाल अब होता है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकें. Thank you for watching or listening to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.